वेलकम टू इग्नाइट इंडिया एजुकेशन, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन डिज़ाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में बताया था, NIFT काउंसलिंग 2020 का डेट आ चुका है। पूरा डिटेल्स एवरीथिंग यू विल नो इन दिस वीडियो। बी विथ अस टिल द एंड। Notification dated on 18th June 2020, 24th July 2020 and 28th July 2020. All the candidates shortlisted for online counseling may note the following. Masters of Fashion Management registration for online counseling will start from 8th August to 13th August 2020. Online काउंसलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 28 अगस्त 2020 ऑनवर्ड्स। तो ये मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट जो है MFM जो है उसका 8 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग का करना है, और काउंसलिंग आपकी शुरू हो जाएगी 20 अगस्त से। मास्टर्स ऑफ डिजाइन 8 अगस्त ऑनवर्ड्स। तो मास्टर्स ऑफ डिजाइन जो है उसका भी सिमिलर है, आपका भी 8 अगस्त से लेकर शुरू होगा और 13 अगस्त तक होगा, और 20 अगस्त से आपके काउंसलिंग ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी सेम आपका भी वैसा ही है। सो 8 अगस्त टू 13 अगस्त एंड ऑनलाइन काउंसलिंग विल स्टार्ट 21 एंड 22 अगस्त 2020। बैचलर ऑफ डिजाइन 8 अगस्त टू 13 अगस्त, ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है। सो यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ एंड रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी ओपनिंग फ्रॉम 8 अगस्त। तो आज से आपका लिंक जो है वो ओपन है रजिस्ट्रेशन का। यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ, और वो आपको 13 अगस्त पहले तक उसको ख़त्म कर लेना है। The online counseling dates for Bachelor of Design and Bachelor of Fashion Technology will be announced later. Student may visit NIFT website for further notification on regular basis. So 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में Bachelor of Fashion Technology BF Tech आपको भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और रजिस्ट्रेशन के बेस पे अभी निफ्ट जो है वो डिसाइड करेगा, प्लान करेगा, और जैसे मास्टर्स की हो जाएगी तो डेट वो अनाउंस किया जाएगा। इसलिए अभी डेट वो अनाउंस नहीं किया गया है। पहले दे वांट टू फिनिश द मास्टर्स प्रोग्राम, देन दे विल स्टार्ट विथ बैचलर। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द अबव referred notification and follow the enclosed instruction carefully. Registration for online counseling is mandatory. The candidate who do not register themselves for online counseling will not be considered for the admission. तो ये जो है ये आई थिंक काफ़ी क्लियर है कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको जो डेट उसके दिए गए हैं उस पर उसके हिसाब से आपको कर लेना है, नहीं तो ये विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। UG स्टूडेंट 8 से लेके 13 के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है और काउंसलिंग के लिए वेट करना है। बाकी सारे जो हैं उनका भी सिमिलर ही डेट है। 8 से 13 अगस्त तक सारे कैंडिडेट जो हैं UG PG MFM सारे सबको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन उनका कर लेना है काउंसलिंग का, और 28 अगस्त से मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट का और मास्टर्स ऑफ डिजाइन का है। मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी MF टेक 21 एंड 22 अगस्त को है। तो ये अभी इंस्ट्रक्शन जो है वो भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन: कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू लिंक ऑन द निफ्ट वेबसाइट. Entries in the registration form shall be required to be filled only in English. Candidates are advised to log in and check their registration portal on daily basis for any further update and instruction. तो आपको निफ्ट वेबसाइट पे जाके और लॉग इन करना है। सारा एंट्रीज इंग्लिश में होगा, उसको इंग्लिश में ही फिल करना है, और रेगुलर अपडेट्स आपको वेबसाइट पे चेक आपको करते रहना चाहिए। स्टेप्स फॉर कैंडिडेट
Candidate need to visit the NIFT website and click the registration link, fill the form, number, date and date of birth, and click on registration button. Enter necessary information along with counseling campus, passing state of 10+2 examination and alternate contact detail, and then click on the proceed button. The confirmation message for the registration will be sent to the registered email ID. Step 2. Note: email, date of birth and password as filled by candidate will be used to log into the website to complete the online required document, upload and submit admission fee. Step 2. Registered candidate have to log into their account to upload required documents as per their program and category. तो जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में भी बताया था और पहले भी आपको बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है. उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, registered candidate to click on login option on the screen, enter from form number, date of birth and password and click login button below. Candidate's profile page will be open. Click on upload view document button. A new window will open. Now click on browse button to select file for each document and then upload button. After uploading all the required documents, click on final submit button of the window. Note: after clicking on final submit button, candidate will not be able to make any changes until it is verified by the NIFT official. List of documents as per admission program and category. Please refer appendix 1 for complete list of document as per admission program and category. So you need to upload your documents as explained in previous video and in the NIFT website. After uploading, you can't change anything until unless NIFT official will verify your documents. तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते. एक बार अपलोड अगर आपने कर दिया है तो आपको वेट करना होगा जब तक कि NIFT उसको वेरीफाई ना कर दे और आपके पास वेरिफिकेशन ना आ जाए. Step 3. Online submission of complete admission fee. After completing the upload document process, a new make payment button will be enabled for registered candidate for online payment of complete admission fee. Click on the button to proceed to the payment gateway and complete the transaction. Note: the payment of admission fee can be made through debit card, credit card, net banking, wallet or UPI. Document and fee verification. All successfully submitted document and fee will be sent for verification to NIFT. Once verification is done by NIFT official successfully, verified candidate will receive a Zoom meeting link with their respective date of counseling and further instruction. In case of any issue found in the submitted document and received fee, registration will be rejected and sent back to the candidate with remarks of correction. Candidate will be able to re-upload. All successful submitted document and fee will be sent for verification to NIFT. Once verification is done by NIFT official successfully, verified candidate will receive a Zoom meeting link with their respective date of counseling and further instruction. In case of any issue found in the submitted documents and received fee, registration will be rejected and sent back to the candidate with remarks for correction. Candidate will be able to re-upload all documents. In case of failure in resubmission of form within time, candidate registration for counseling will be cancelled and candidate will only participate in the subsequent round of counseling, if any. So this is very important. If NIFT is asking you to upload more document or any missing information, you should upload immediately
विद इन द टाइम। तो जो भी आपको कोई कम्युनिकेशन आता है आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आपको वो तुरंत इमीडिएटली अपलोड कर देना चाहिए, नहीं तो आपका ये जो राउंड है उसमें पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और आप नेक्स्ट राउंड में ही बैठ सकते हैं। स्टेप 5, सीट रिक्वेस्ट जनरेशन। रजिस्टर्ड कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर काउंसलिंग ऑन द शेड्यूल डेट थ्रू जूम मीटिंग लिंक शेयर्ड आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन process. NIFT official will show the seat chart to candidate as per his her choice using screen sharing feature of Zoom meeting. Once candidate confirm his her final choice, NIFT official will allot as per his CMR request the seat for candidate and send further to NIFT-HO for approval. After approval, seat will be allotted to the candidate and download allotment later option will be enabled in the candidate registration portal. Registered candidate must be present for the counseling on the scheduled date through Zoom meeting link share after successful verification process. NIFT official will show the seat chart to candidate as per his her choice using screen sharing. NIFT official will show the seat chart to the candidate as per his her choice using screen sharing feature Zoom meeting. After approval, seat will allotted to the candidate and download allotment letter option will be enabled to the candidate registration portal. तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने आपको कल बताया है। आपका सीट एलोकेशन जो है वैसे ही होगा जब सब हो जाए, जब सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद लास्ट ये जो 5th जो है स्टेप, इसमें आपको आपकी सीट एलोकेशन जो है वो आपको बताई जाएगी और आफ्टर अप्रूवल यू कैन डाउनलोड योर एलोकेशन लेटर। नोट, इन केस कैंडिडेट सीक्स एडमिशन अंडर चिल्ड्रन वार्ड ऑफ NRI category, candidate has to submit additional document and undertaking and pay balance fee before cancellation time provided during seat allocation. An option will be enabled in the candidate registration portal for the additional requirement process after provisional seat allotment. Information on the refund and withdraw. All withdraw and refund may be submitted online mode only on the portal. On offline request or request by email will not be considered. NIFT will not be responsible for refund if not applied on the portal as per schedule given under. So this is the if seat admission not taken after registration, full fee including registration will be refunded. Withdraw request after confirmation of seat, requesting receive deposit you will receive. So this is the refund policy. Now list of documents required for uploading verification and annexure required for attending the online counseling for bachelor degree program. Latest photograph, 2 passport and 4 stamp size mandatory will be uploaded by the candidate with the class mark sheet only for date of birth. Provisional self-attested copy of 10th class certificate only for date of birth mandatory. Self-attested copy of 12th class mark sheet or affidavit in result not declared by board mandatory. Provisional admission given in case of affidavit. Self-attested copy of 12th class certificate, self-attested copy of SC certificate if you are in the reservation category, self-attested copy of ST certificate, self-attested copy of PWD certificate, self-attested copy of OBC, self-attested copy of EWS, self-attested copy of 12th, self-attested copy of 12th class school living certificate for domicile seats only, mandatory if candidate is taking domicile seats. Self-attested copy of 12th class school living certificate domicile if candidate is taking domicile seats of fashion technology. This is also very much similar to the previous page. All right, so all documents are similar to the list of documents require uploading verification, require masters of fashion technology. 2 passport size, 4 stamp size, self-attested copy of 10th class mark sheet, self-attested copy of 10th
class certificate, self-attested copy of class mark sheet. So these are similar to the till here it's the same certificate, SC, OBC certificate, self EWS certificate. Alright, and self-attested. You one extra thing which is here for PG program, self-attested copy of degree of BF Tech from NIFT or BE Tech from any institute, university recognized by law in India. So you have to submit everything including the bachelor degree certificate. So these are the certificate document required for admission under children's ward of NRI. These are the certificate for NRI. So this is the whole NIFT counseling document and guidelines. I hope it is clear. It is very much similar what we have explained you in the previous videos. So you have to register. First you have to register, and then second step will be uploading your documents. Third will be verification after the Zoom meeting, and you will be allotted your seat. So good luck everyone. We are here. If any kind of issue you have, you can comment below. We will revert back. We will help you. We will reply you. Also, if you need any help, you can fill the Google form kept in the video description so that we can help you. You can connect with us. Like the video, press the bell button. We'll see you in the next video. Good luck everyone.